Hello everyone. Now we study electrostatics lecture 3rd. Last time all of you study charge and charge related formulas. Then now new topic, electric force. Electric force. Scientist Coulomb defined electric force. Therefore, it is also known as Coulomb's law. Of electrostatics, in which two charges Q1 and Q2 are separated at a distance small r, then attraction and repulsion force between charges is directly proportional to product of their quantities and square inverse of distance, which is known as attraction or repulsion force between two charges, is directly proportional to product of their quantities and inversely proportional to square of distance between them. Therefore, we have a constant is called Coulomb constant. K. It is the value of K is 1 upon 4 pi of epsilon naught, in which epsilon naught is shows permittivity of electric field in vacuum, which has separate value 8.85 × 12 Coulomb square per Newton meter square, and 1 upon 4 epsilon naught 9 into 10 over 9 Newton meter square upon Coulomb square. It is also said to be F equal 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. In vector form, last video you will see a vector equal 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square RQ in R cap in vector form. ये आप पहले भी स्टडी कर चुके हैं कूलम्ब्स लॉ को. अब इसी से रिलेटेड आगे आप कंडीशन बढ़े. फोर्स जब जो अप्लाई होता है इससे डिफाइन होता है फील्ड, जिसे आप कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड a field in which a charged particle experience an electric force over them. It is called electric field. जैसे कि कोई चार्ज पार्टिकल है, ये अपने ऊपर एक फोर्स को रिलाइज करता है इस टाइप से, तो आप ये कहेंगे कि जो आसपास की जो फील्ड होगी इस फील्ड को कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है, कितनी ज़्यादा है कितनी कम है, इसे डिफाइन कर सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से. इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड which denote the value of electric field in medium.
Intensity of electric field is denoted by capital E and formula equal F upon Q नॉट. Q नॉट आपने स्टडी किया था टेस्ट चार्ज, ये आपका रहेगा E वेक्टर इक्वल F वेक्टर अपॉन Q नॉट. इस टाइप से आप डिनोट करेंगे. यूनिट आप डिफाइन कर, यूनिट आपकी इंटेंसिटी की होगी न्यूटन पर कूलम एंड डायमेंशन, फोर्स की डायमेंशन आपकी mLt-2 एंड चार्ज की डायमेंशन AD. Therefore intensity of electric field mLt-3 and A-1. Quantities